Welcome aspirants, welcome to Sriram IAS to the new series of a daily PYQ, the previous year question of mains UPSC Civil Services Examination for your mains this year. तो आज की जो सीरीज है उसमें आज जो सब्जेक्ट होगा वो होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वी विल बी डिस्कसिंग ए मेंस क्वेश्चन फ्रॉम ईयर 2024. तो वेलकम टू श्रीराम आईएएस, माय नेम इज सौरभ और आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है 2024 के जीएस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट में सवाल पूछा गया था. तो द क्वेश्चन इज, जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली फर्स्ट and then try to understand what exactly they are demanding from you. Flooding in urban areas is an emerging climate induced disaster. This is the first sentence they are using. Then discuss the causes of this disaster. So here the operative word is discuss. This first statement is a declaratory statement. Here they have declared simply that flooding in urban areas is an emerging climate induced disaster. Discuss the causes of this disaster. Mention, the second operative word is mention the features of two such major floods in the last 2 decades in India. And third is describe the policies and framework in India that aim at tackling such floods. So with mains questions, the first and foremost thing that you have to keep in mind is that you are always short of time when you are writing the mains of UPSC Civil Service Examination, because you have to write a lot plus the number of hours that you have got are very less. तो वहां पे आपको जो टाइम लिमिट है और वर्ड लिमिट है उसको एब्सोल्युटली रिस्पेक्ट करना है. यू हैव टू अदर टू द वर्ड लिमिट. if you breach it, first of all, you will be fall short of some questions in the paper. और दूसरा, आपको पेनाल्टी भी यूपीएससी लगा सकता है because it's an stated policy. 250 words means 250 words. कुछ ऊपर नीचे हो जाता है, but by and large you have to adhere to this particular word limit. There is a reason that they are mentioning this word limit again and again. So 15 marker this question. The first statement you have to start this question. The first statement is flooding in urban areas is an emerging climate induced disaster. So what first of all is flooding, and that too in urban areas, and it's an emerging climate induced disaster. What is flooding? Inundation of land and property. Urban areas are highly populated, heavily dense areas. Administrative उनकी एक definition होती है, but you have to don't go have to those particular aspect of the question. आपको सिर्फ यहाँ पे एक basic premise setup करना है क्योंकि already एक declaratory statement दिया हुआ है. So you have either you can start with describing what the flooding is in urban area, or simply you can go ahead with that flooding in urban areas is emerging climate induced disaster. Why? In the next operative part, they are saying discuss the causes of this disaster. Initially, you can mention variety of issues, reasons. Yes, they are there because of high intensity rainfall. Climate change is what? Climate change is doing all of it. Climate induced these things are. So climate change is bringing all of it. So first of all, either you can describe the flooding or you can take this way as well. आप इसको इस तरीके से भी हैंडल कर सकते हैं. तो इंट्रोडक्शन जो होता है वो ब्रीफ होना चाहिए और impactful होना चाहिए, so that whatever you are going to write ahead are simply given a glimpse in the introduction. तो इंट्रोडक्शन आप ऐसे शुरुआत इसकी कर सकते हैं. Now they are asking discuss the causes of this disaster. What could be the causes of this disaster? They are asking you to set up the causes of this disaster plus discuss करने के लिए कह रहे हैं. What does discuss mean? Discuss means they are asking you to bring forth the argument, reasoning, analysis थोड़ा आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा. तो जब आप डिस्कशन की तरफ जाओगे, causes की तरफ जाओगे, तो obviously there are primarily two types of causes. First is natural causes and second is anthropogenic causes. So there are only two types of causes in this case. The natural cause obviously is what? It could be because of a cyclone. जैसे अम्फान एक cyclone आया था. It could be because of a cyclone. It could be because of cloudburst. Yes. It could be because of excessive
rainfall like in Mumbai year 2005. So either it could be cyclone, it could be cloudburst, it could be excessive rainfall. Sometimes natural disasters are also caused in the coastal urban areas by high tides or tsunamis. So वहां पे भी urban flooding की incidents होते हैं, वो भी अर्बन एरियाज ही हैं लेकिन कोस्ट में लोकेटेड हैं. तो बिकॉज ऑफ सुनामी एंड हाई टाइड्स ऑल्सो समटाइम्स यू हैव द urban flooding. The second thing here which you have to keep that in mind when you are discussing it, that you will put in the anthropogenic causes. Here you will talk about many issues like why your city suffers from urban flooding because of, yes, unplanned urbanization. The first and foremost, urbanization is properly not planned properly, so various floodplains will be encroached upon, the plans and policies will be on papers, illegal colonies will be set up, the green and blue spaces of the city will simply disappear steadily. And because of it, a lot many problems will occur, including urban flooding. Because exactly what is happening? The precipitation will be so high that the entire city, the smaller area which we call city, which is highly densely populated, will not have avenues simply to let go this water. अगर हम इसको simple भाषा में समझे तो this exactly what is the problem is. Earlier there were no such major flooding cases in urban areas. Why? Because there were a lot of green spaces. तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा वाटर जो है वो परकुलेट हो जाता था डाउन ग्राउंड, अंडरग्राउंड, जो कि अब नहीं हो पा रहा है. उसकी एक बहुत बड़ी वजह अर्बनाइजेशन का नेचर भी है. सो इम्प्रीवियस जो स्ट्रक्चर्स हैं, असफॉल्ट के रोड्स हैं, कंक्रीट के रोड्स हैं, पूरा urban areas is what? A jungle of concrete. So exactly because of it, what is happening? A lot of water which will simply be absorbed by the soil cannot be absorbed by the land surface because there is no greenery there. पूरी completely इसको asphalt और concrete ने घेरा हुआ है. तो एक बहुत बड़ी वजह ये भी बनती है. This is also a very important factor. Then you have your drainage, which is inadequate, which is not up to date. For example, Delhi's master plan, last master plan of Delhi was prepared in 1976. A new master plan is underway, but it is yet to come. But the old master plan is of 1976. So drainage system was designed according to that master plan. So this happens that in many areas, the drainage are not designed to accommodate the contemporary climatic and population realities. इसके अलावा हाईली डेंस पॉपुलेशन होती है यहाँ. उससे क्या होता है? उससे आपकी जो वाटर डिमांड है सिटी की वो बढ़ जाती है. एंड बिकॉज वाटर डिमांड इज सो हाई, पॉपुलेशन इज सो हाई, द ग्रे वाटर जनरेशन विल ऑल्सो बी वेरी हाई, विच विल बी फ्लोन थ्रू नालीज. फॉर एग्जाम्पल, ड्रेनेज structure will carry that water. If the drainage system is not properly designed to handle that much of load, and plus a lot of solid waste is gone through it, तो वहां पे वो चोक भी हो जाता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती. तो ये चैलेंजेस आपको एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स की वजह से यहाँ पे आ रहे हैं, एंड दैट इज क्रिएटिंग ए लॉट मेनी प्रॉब्लम्स एंड ब्रिंगिंग ए लॉट मेनी अर्बन फ्लड्स. तो अर्बन जो गवर्नेंस है, सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं आपके अर्बन सिटी में, उसके भी ये सीरियस इशू हैं. लैक ऑफ फाइनेंसेस आर देयर, लैक ऑफ प्रॉपर प्लानिंग इज मेंशन्ड, एंड ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कंबाइंड you have climate induced urban floods. Now these are the factors which you will, the causes which you will discuss in the first operative part. इंट्रोडक्शन के बाद आप ऐसे इसको कॉजेस को मेंशन करोगे, थोड़ा उसमें रीजनिंग करोगे, एग्जांपल्स दोगे और सब्सटेंटिएट करोगे. नाउ विल कम द मेंशन पार्ट. दे आर आस्किंग यू टू मेंशन what does it mean? Mention means what? You don't have to put a lot of analysis or reasoning in this operative part. What you have to do is simply to list out the features, list out the details and facts of what has been asked of you. So in this case, they are asking you to mention the feature of two such major floods. So there are many such examples. Primarily Mumbai is a very famous example of 2005, Chennai 2015, उसके बाद हैदराबाद 2018-19 was very famous, and then you can cite obviously these days Bengaluru
2022 and 3. That year was also very important. So here, if you want to mention, you can start with Mumbai. Mumbai 2005 was such a deadly urban flood that it cost almost $5 billion to Indian economy. So here you will mention the Mumbai's case. Excessive southwest monsoon-led rainfall occurred almost 944 mm within 24 hours. The city's drainage system was not designed to carry that much of excessive storm water, first of all. Second, proper maintenance was not taken care of. Third, there are the natural floodplain and the natural stream was obstructed, that the river which was named as Meethi river, this river, its complete route was captured in a way, and that is why a lot of damages was there in Mumbai's flood 2005. So you will mention the excessive rainfall, southwest monsoon, then you will mention the situation of the city, how it was unprepared, drainage system was not proper, there were urban governance issues, there were unplanned urbanization and impervious structure. But primarily it's a coastal city. The most damaging thing that year was the drainage. If the drainage was properly designed, it could have been somewhat averted. The damage, remember, no disaster, natural disasters can be completely eliminated. You can only mitigate it. So damage would have occurred. No drainage system can be designed to handle this much of amount of water. But remember, you are simply giving out the mentioning the features. You are not arguing about it. You are not reasoning about it. Dusra, you can mention Chennai. Similar thing happened in 2015, and this was the case of northeast monsoon, excessive rainfall around 494 mm within 24 hours was there. The green spaces and the blue spaces of the city have long been disappeared in the Chennai metropolitan region. प्लस एक वहां पे सिग्निफिकेंट एक जो बात उस साल पे हुई कि एक्सेसिव रेनफॉल तो हुआ और ड्रेनेज के भी इश्यूज थे, प्लस देयर वाज अ लोकल लेक, the discharge of the water from that local lake was not properly regulated. So that is why वहां पर जो डैमेज हुआ बहुत ज्यादा हुआ. अगेन आप मेंशन करेंगे रेनफॉल को, साउथ ईस्ट रेनफॉल को, यू विल टॉक अबाउट द लोकल इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस फ्लड. सो इन दोनों को आप मेंशन कर देंगे विथ स्मॉल डिटेल्स. यू विल नॉट आर्ग्यू अबाउट इट, यू विल नॉट प्रोवाइड द रीजनिंग. देयर इज नो नीड टू गो फॉर द रीजनिंग, द प्रोज एंड कॉन्स, क्योंकि मेंशन करने के लिए बोला है. तीसरा ऑपरेटिव पार्ट है आपका डिस्क्राइब का. नाउ यू आर बीन आस्क्ड टू डिस्क्राइब. डिस्क्राइब व्हाट? द पॉलिसीज एंड फ्रेमवर्क इन इंडिया that has been there to tackling such floods. What are the policies? Immediately to your mind, the most important policy should come, and that is National Disaster Management Plan, NDMP, National Disaster Management Plan 2009, a very important document. And then you have NDMA guidelines of 2010. Both talk about the urban flood risk mitigation. They will focus on what? Urban governance. They will focus on what? Creating more green spaces. They will focus on what? Early warning systems. ये काफी इंपॉर्टेंट दोनों एक प्लान है और एक गाइडलाइंस है जो एब्सोल्युटली क्रिटिकल है. इनको आप डिस्क्राइब करोगे कि ये एग्जैक्टली इनको सबटाइटल दोगे इनका और इनके बारे में 2 या 3 लाइनों में लिखने की कोशिश करोगे. उसके बाद आप आगे आओगे. There are many good programs to deal with urban floods like Smart City Mission. A Smart City Mission also talks about revamping of what? Urban infrastructure, including drainage, including preparing the city. Smart City means what? Specifically 100 cities were taken out in this program. वहां उनको स्मार्ट बनाने की कोशिश हो रही है, उनकी गवर्नेंस को रिफॉर्म करने की कोशिश की जा रही है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, कीपिंग इन माइंड व्हाट? द natural disasters. The context was already there. इसके बाद you will talk about Amrut. Amrut mission were also very important. Amrut mission was specifically designed for upgrading the urban infrastructure, going for restoring the green and blue spaces of the city, or
प्रॉपर यहाँ पे डेटा मैनेजमेंट की भी बातें की गई थी अमृत मिशन के अंदर। इसमें हम बात कर रहे हैं अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की, रिजुविनेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। सो दैट वाज द फोकस एरिया ऑफ अमृत। इसके अलावा कोस्टल एरियाज के लिए भी इंटीग्रेटेड कोस्टल जो मैनेजमेंट था, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट, आईसी, इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन, आईसी जेडएम। तो आईसी जेडएम की जो गाइडलाइंस हैं, दे आल्सो इन ए वे टॉक्स अबाउट द कंटेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अर्बन फ्लड्स, क्योंकि कोस्टल मैनेजमेंट की यहाँ बात हो रही है। तो कोस्टल एरियाज में भी, क्योंकि बिकॉज ऑफ नेचुरल फैक्टर्स आर देयर, तो फ्लड्स की पॉसिबिलिटी बनी होती है, तो उनके बारे में वहां पे भी बातें की गई हैं, कैसे जो रेजिलियंस है वो कोस्टल एरियाज में डेवलप की जाए। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट जो गाइडलाइंस हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, उनको आपको डिस्क्राइब करना, उनका नाम लिखना है, 1 से 2 लाइन में उनको डिस्क्राइब कर देना। Now, in any case, one you always should keep that in mind. You should not violate the word limit. There can be an essay written on this particular question. आप बहुत बढ़िया इसमें लिख सकते हो, ब्रिलियंट इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, बॉडी लिख सकते हो, कंक्लूजन लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने वर्ड लिमिट वायलेट कर दी तो आपका ऑब्वियसली टाइम ज्यादा लगेगा आंसर लिखने में, और आपका जो पूरी बुकलेट होगी आंसर की वो बैलेंस्ड नहीं होगी। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस छूट जाएंगे, या फिर कुछ क्वेश्चंस बहुत अच्छे आप आंसर करोगे, कुछ बहुत बुरी तरह से हो जाएंगे। तो वर्ड लिमिट तो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करनी ही करनी है, इसीलिए इंट्रोडक्शन छोटा सा होगा। तुरंत आप, क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा है, देन यू विल फोकस ऑन द कॉजेस, यू विल डिस्कस देम, जो ऑपरेटिव वर्ड है, देन यू विल गो फॉर द मेंशनिंग पार्ट, एंड देन यू विल डिस्क्राइब। नाउ कंक्लूजन में यू कैन टॉक अबाउट ऑब्वियसली कि इसको कंक्लूड कैसे करोगे। आपको समरी नहीं लिखना कंक्लूजन में, कभी भी समरी नहीं लिखना, नेवर राइट समरीज इन कंक्लूजन, ऑलवेज समरी इज व्हाट, दैट व्हाटएवर यू हैव मेंशन्ड you simply reproduce in a shorter format in conclusion. That's never to do. You have to focus on what, थोड़ा सा future orientation यहाँ पे होना चाहिए। Strengthening urban governance, more coordination among various departments in a way, better early warning systems and innovative कुछ solutions आप दे सकते हो, जैसे आजकल दुनिया भर में चल रहे हैं स्पॉन्ज सिटीज के बारे में बातें की जा रही हैं, स्पॉन्ज सिटीज जैसे चाइना बातें करता है, या फिर कम्युनिटी गार्डन्स, रेन गार्डन्स भी खड़े किए जा रहे हैं। जो फ्यूचर ओरिएंटेड सिटीज हैं वहाँ कम्युनिटी गार्डन्स, स्पॉन्ज सिटीज जैसे इनोवेशन लाए जा रहे हैं, ताकि एक्सेसिव रेनफॉल जब होता है तो जो रन ऑफ वाटर है जिसके कारण फ्लडिंग आती है उसको अब्जॉर्व किया जा सके, वो परकुलेट हो जाए अंडरग्राउंड वाटर में, नीचे चला जाए। सो दैट इज द क्रक्स हियर। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में आप लिख सकते हो थोड़ा सा। सो ब्रीफली इसको आप मेंशन करके इसको कंक्लूड कर दोगे। वैरायटी ऑफ वेज यू कैन राइट द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन, वो क्योंकि हर इंडिविजुअल अलग होता है, सबकी अपनी अलग अलग सोच होती है, तो इसमें परफेक्शन आप मत ढूंढिए। इसमें सिर्फ जो आपको कोर रखना है कि कॉजेस, मेंशनिंग एंड डिस्क्रिप्शन, दैट शुड बी, दिस इज हाउ द योर आंसर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, और तीनों को बराबर प्रपोर्शन देते हुए विद इन 250 वर्ड्स, और जो आपके पास टाइम है 7 to 8 मिनट्स, उसमें इसको कंप्लीट कर देना। बाकी अगर आप इसको 1000 वर्ड्स में लिखने जाओगे तो 1000 वर्ड्स में भी लिख सकते हो, 500 वर्ड्स में लिखने जाओगे 500 में भी लिख सकते हो, बट दैट इज वाई द PYQs आर वेरी इंपॉर्टेंट। दे आर आस्किंग यू टू राइट दिस आंसर in a short format, 250 words. That is the crux. A very beautiful question, because this is literally, this disaster, the climate induced disaster of urban flood is going to be a huge menace as we go for more urbanization and our economy grow, and climate change is affecting this journey of Indian development. So that was the PYQ of disaster management. You can join me on my Telegram. We will meet you with a new PYQ of a new topic tomorrow. Thank you for giving me your time.